I have came out because मुझे कुछ काम था. It looks all messy. I did it and this is pretty sister here. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to a brand new vlog. So बहुत ही randomly I thought कि चलो आज vlog शुरू करते हैं. बहुत time से I haven't vlogged. I was uploading a lot of other videos, like I uploaded my skincare, morning skincare routine, and with that I have to also upload my night skincare. आज shoot करती हूँ अगर time हुआ तो, and will upload it. So बहुत ही randomly I was just sitting and waiting, so I thought कि चलो vlog शुरू करते हैं and let's see if I have anything we are doing or going anywhere. I will vlog it. But anyhow बहुत दिन हो गया क्योंकि मैंने vlog नहीं किया. Also for all of you who already do not know, I've cut my hair all short, not all short, it's still long but pretty short from me. In case you haven't watched that video, I'm also gonna link it in the description box so that you guys go check it out. And अभी I have came out because मुझे कुछ काम था, काम almost हो गया है, तो I'll be going back home and उसके बाद जो भी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, I'll be showing you guys. देखते हैं, ऐसे कुछ खास प्लान तो नहीं है, but let's see. Okay, so बहुत टाइम से मामा को एक न्यू फ़ोन लेना था एंड वी थॉट अ लॉट कि ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले, एंड फाइनली वी डिसाइडेड कि चलो आज चलते हैं, जाकर फ़ोन ले ही लेते हैं. एंड शी हैड अ बेसिक क्राइटेरिया दैट शी वांटेड वीवो विथ सर्टन फीचर्स. सो हमने घर पे अच्छे से स्टडी वगैरह करके गए थे एंड वी वेर pretty much sure that we'll be buying this particular Vivo Y200e. ये I think pretty latest ही model है, and whatever feature she wanted that was there. She had tried Samsung, Vivo, Oppo, but she likes Vivo, and of course she has to use it, so it's all her call. If she likes it, if she wants it, we're gonna get it. But anyway, हम बाकी सारे options भी check out कर रहे थे, but as decided, we finally got her this new phone. So yeah, no nazar please. Anyhow, तो यहाँ पे भैया फटाफट से उसका opening कर रहे थे because he said that he'll set everything नए फ़ोन में and he will give us. So यहाँ पे वही सब हो रहा था. And yes, here it comes, the beauty. It looks very pretty. She likes it. She is happy. So we all are happy and we are taking it back home. And उसके बाद मुझे जाना था grocery shopping because मुझे कुछ सामान खरीदना था घर के लिए, basic and majorly अपने snacks के लिए. तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं grocery shop. चलिए चलते हैं, फटाफट से करते हैं अपना shopping. Of course, कोई भी grocery shopping is incomplete without taking Maggie and some ice cream. And finally, I spotted this cutie right here. Hello everyone, so it's the next day and आज I am at home, like at least for next 4-5 hours मैं घर पे ही हूँ आराम से. तो I'm thinking to do something for my hair. As you guys know, I'm back in my like hair care era of doing something for my hair, and I'm keeping it very basic, not keeping it very complex, वरना you know हम continue नहीं कर पाते. So I really wanted a routine जो मैं continue, I know कि I am gonna continue doing it, like following it. सो आई एम ट्राइंग टू कीप समथिंग लाइक दैट जो बहुत ईजी बेसिक हो, जो मेरे वर्क के साथ साथ मैं कंटिन्यू कर पाऊँ बेसिकली. सो आप देख सकते हो राइट नाउ आई हैव नॉट ऑयल्ड माई हेयर फॉर द पास्ट 1 week बिकॉज वर्क के साथ साथ बैलेंस नहीं हो पा रहा था. बट आज आई एम गोना डू इट. सो लेट्स गो स्टार्ट विथ ऑयलिंग एंड आई एम गोना शो यू व्हाट एग्जैक्टली आई डू. सो या, एंड वी ऑल्सो हैव माई प्रिटी सिस्टर हियर. Say hi. Hi. तो चलिए हेयर ऑयलिंग करते हैं. एंड वी ऑल्सो हैव जॉय हियर. लुक एट हिम, he's taking sun bath, right? Joy, what are you doing, baby? Okay, let's go. Cutie boy, yeah. Cutie. Love you. Okay, now let's go.
I'm going to be keeping my hair oil very basic. I'm going to mix this coconut oil with some castor oil. Please use whatever you have at home. जो भी ब्रांड का I've mixed them and now by double heating में हीट करूँगी. सबसे पहले पानी को हमने अच्छे से बॉईल कर दें, उसको ऑफ कर देंगे. उसके बाद जो ऑयल हमारे जो छोटे से कटोरे में थे उसको हम इसमें रख देंगे for 3 to 4 minutes. प्लीज़ बी वेरी केयरफुल एंड मेक श्योर कि जब आप ये रखें तब आपने गैस को प्रॉपरली ऑफ कर दिया हो. देखिए ऐसे. एंड नाउ वी आर गोना लीव इट एंड लेट इट डू इट्स मैजिक. ओके, सो वी हैव द ऑयल राइट हियर. इट इज काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ वार्म. आई हैव ओपन माय हेयर. आई हैव रिमूव्ड ऑल द knots, very important. And now we're going to start with application. Normally I've kept it सामने, taken the oil fingers में, and I'm going to start first applying it scalp में अच्छे से. I'm going to keep massaging very gently, don't be extremely rough. So बहुत ही आराम से we're going to take the oil and we're going to just keep massaging in sections according to your hair length. आराम से. इवन जो ऑयल का प्रपोर्शन जो आप लोगे अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग लीजिए. एंड इफ इट्स एक्स्ट्रा डू नॉट वेस्ट इट. प्लीज कीप इट. यू कैन यूज इट नेक्स्ट टाइम लाइक आफ्टर 1 day 2 day आप आराम से यूज कर सकते हो. अगेन जस्ट डबल हीट इट एंड री यूज इट. डोंट वेस्ट द ऑयल. नाउ आई एम गोना अप्लाई इट ऑल ओवर माई स्कैल्प. Okay, so I've almost applied it अच्छे से पूरे scalp में. But one thing that I make sure that I do no matter what is again taking the oil थोड़ा सा सारे बाल को I do it like this and I start applying like this in this motion. This really helps in hair growth. So अच्छे से we're gonna be doing that. It looks all messy, but yeah, trust me, it's definitely gonna help you. Now let's do it. Okay, so done. Now it doesn't end here. We have just one last step to go, which is taking your hair and पूरे hair length में I apply it like this. अच्छे से कोई कंजूसी मत करिए. Take enough, more than enough that you need and apply it. पूरे टिप तक I'm gonna be applying. बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि सिर्फ स्कैल्प पे लगाएं and that's it. Again, it's your own personal choice. But this works for me. I have been doing this for years and I feel कि it's good for hair growth. That's why I apply it पूरे hair length पे. अगर आप चाहो तो सिर्फ स्कैल्प पे लगाओ. Do what you like. But okay, so now that we have almost finished oiling अच्छे से, I have kept this one comb which is just for my oiling days. I do not use it ऐसे regular days में, just so that we make sure कि हर एक strand को oil अच्छे से लगे. Just comb through your hair one last time like this. अच्छे से comb it through so that all your hair strands are properly oiled. Now if you're doing it raat ko, you can braid it and keep your hair, but since it's daytime and I'll be washing it off after 1 to 2 hours, so I'm just making it into a bun. Otherwise I prefer doing a braid, but abhi I'm एक bun कर रही हूँ and I'm gonna put up my clutcher. That's it. We are done. Super sleek. But with that, if you see, there are oil on my face and it's really not good. It causes acne. So what I'm going to do is I'm going to wash my hands. I'm going to wash my face properly with my face wash. And then we're going to let it stay for 2.5 hours. We'll see. And then we'll rinse off with shampoo, conditioner, wash everything off. And then I'm going to be back. Okay, so it's been a couple of hours since I've taken bath. My hair is like semi-dry at this moment, and I think as I mentioned beginning में ही कि this complete process is extremely easy. I've kept it easy. I haven't done anything like very complex कि आपको tough feel हो.
इवन इफ यू आर वेरी बिजी, यू डू नॉट हैव टाइम, आई थिंक दिस टाइप ऑफ ऑयलिंग आप आराम से कर सकते हो. कीप इट फॉर एज मच टाइम एज यू कैन. मुझे पर्सनली रात को रखना पसंद है, बट टुडे आई कुडंट, आई हैड वर्क, सो दैट्स व्हाई आई डिड इट. एंड दिस इज व्हाट इट फील्स लाइक. इट फील्स सो सॉफ्ट. आई जस्ट वॉश्ड इट विथ शैम्पू, कंडीशनर, नॉर्मल बेसिक जो भी आप यूज करते हो, स्टिक टू दैट. एंड बट आई थिंक ऐसा कुछ आपको रिजल्ट फर्स्ट उसमें तो डेफिनेटली नहीं दिखेगा. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट विथ all of these things is what I feel. And yes, I think with that I'm also gonna end this vlog. This vlog was all over the place and a mixture of everything, anything and everything. So anywho, I'll super soon be back with another video. If you like this, then make sure that you like, share, subscribe. Thank you for all the love. See you guys super soon. Bye.